As Honorable MP, also media in charge, Anil Baluniji has said, PM has had a very impactful tour of the United States. And as we talk, he's in Egypt. I just want to very quickly, I understand Honorable Minister Smriti Irani and also Minister Hardeep Puri has addressed you all about the visit of Honorable Prime Minister to the United States in great detail. I just want to bring to your notice a few highlights of the US visit, which are very important, and then carry forward to what is the visit's impact in Egypt. So, among the several things, the first emphasis is on the fact that it was a bipartisan invitation which was given to Honorable Prime Minister to address the Joint House. And it was a very significant event for the second time for a Prime Minister to be called to address a joint session of the US Congress and the Senate, and to have received such a standing ovation is a matter of pride for all of us in this country. And during that visit and during that speech in particular, Honorable Prime Minister has expressed very clearly where India and US relationships stand and what is it that it can do towards global order. So I'm extremely happy to say it was a visit where both India and United States have taken warmly to each other and established such steps towards greater realization of our national goals. Most often, these visits also accompany with meeting of great eminent thinkers, leaders. So this visit also, PM has had meetings with CEOs, various CEOs, Nobel laureates, and so on. But what I would want to highlight is the fact that even yoga, which was done in the UN campus, had 132 nationalities participating in it. So it drew great attraction, and as a result, taking yoga to a level that has got recognition all over the world is a very important aspect that I would highlight. But from the announcements post the visit, I would like to highlight the fact that semiconductor supply chains, Micron technology, for instance, is likely to invest $800 million towards $2.75 billion semiconductor assembly and test facility in Gujarat. And this itself will give more than 5,000 new direct jobs, and also 15,000 what we call indirect job, what they call as community level jobs. We are also becoming a part of an alliance of rare earths and materials. And in this, it is expected to support more than $2 billion planned investment. Center for the Semiconductor Center for Commercialization and Innovation, which is being set up in Bengaluru, will have, in its first 5 years of operation itself, the center is expected to support more than 2 billion planned investments, 500 new advanced engineering jobs, and potentially another 2,500 jobs in manufacturing ecosystem. Now, this is a very big step forward. Similarly, Semiverse Solutions, which will train up to 60,000 Indian youth into artificial intelligence and use of semiconductor-related education and workforce development goals will get fulfilled. Critical mineral partnership, which I've already mentioned. Quite a few of these companies are coming out and wanting to set up these capacities in India because lithium and cobalt and the use of these rare earths are going to make the future of energy and energy transition. So that's a second. Space also had great lot of achievements.
advanced training will be provided. NASA will be providing advanced training to ISRO, and that will also help for a joint effort to the International Space Station in 2024. Advanced telecommunication has also had agreement. India and US launched public-private joint task force for the development and deployment of open RAN systems. I'm just giving you the highlights and not going into the details of everything. Quantum and advanced computing has also received a joint Indo-US quantum coordination mechanism. You know, it was announced as a part of our budget. And then they will also support joint research in artificial intelligence, quantum, and advanced wireless technologies. And then there is also the arrangement with the National Science Foundation, which is the US body, and it announced that 35 joint research collaborations will also happen with the India's Department of Science and Technology, and they have also signed a new cooperative arrangement with the METI ministries. Department of Atomic Energy has also had a share in the agreements, is making 140 million in-kind contribution to the US Department of Energy. And finally, the seventh item is on innovation and fiber optics investments. India's Sterlite Technologies Limited has invested 100 million in the construction of optical fiber manufacturing units in Colombia, and that will facilitate 150 million in annual sports. But beyond all this, I'd certainly like to draw your specific attention for directly some very important defense production-related announcements. GE, which is the biggest of aeronautics companies, has signed an agreement with HAL for joint production of F414 engines, aircraft engines. Now, this will be made in India. 80% of technology is getting transferred. Now, I highlight this because it is HAL, about which repeatedly the Indian opposition sheds crocodile tears. What's happening to HAL? Bangalore, you're not doing much to it. Please understand, HAL is what is going to have this joint production agreement with the GE. Second, and these made in India engines will be used for HAL's own Tejas aircraft. You know, Tejas is a completely Indian made aircraft for which the engine now is being the GE F414 engines. Then we are also getting unmanned aerial vehicles, UAVs. The Sea Guardian MQ-9B is being brought into India. One of the biggest strength which we can provide to our armed forces. You also have an agreement, Master Ship Repair Agreement. India will now become the biggest center for ship repairs. Already the US Navy has concluded an agreement with the Kattupalli, which is very close to Chennai, Larsen and Toubro shipyard, where India will be the center and will be the hub to repair most of the major ships. And further, they are also trying to sign up with Mazagon Docks in Mumbai and with also Goa shipyard. So is also 3 Indian liaison officers who are going to be placed in the US command, and this will be very good in building our mutual capacities, and also emphasize on the Defense Accelerated Ecosystem, IndusX, which was inaugurated on June 21st, 2023. This will be a network of universities, startups, industry, and think tanks. And this will facilitate in joint defense technology innovation. There are also several people-centric steps which have been taken. You heard Honorable Prime Minister himself announce that for the H-1B visa extension,
Indian citizens do not need to come back to their home country, but they can renew it even being there. That will save a lot of effort for our own people, otherwise they keep coming back and waiting to get it renewed. You also heard that there are 2 new consulates which are getting opened, Bengaluru and Ahmedabad. Fulbright Kalam Climate Fellowship, additional facilities also being brought in. 100 additional US undergraduate students will study or intern in India. This is also being people-to-people measure. And those who are interested in knowing, India is funding the establishment of a Tamil Studies chair in University of Houston. Aviation deals, which are commercial deals, have also happened just in time before Honorable Prime Minister went to US. So you've heard about that. Many other commercial decisions which I'll draw your attention to are Amazon, which will bring $15 billion and 26 billion in the country to investments to be made here. You heard Alphabet Sundar Pichai talking about opening a fintech center, global fintech center in Gujarat, and indigenization is happening there. So I've just given you some highlights of the visit to the United States. But this minute, I like to highlight the fact that during his visit, which is ongoing in Egypt, our Prime Minister has been awarded the highest award, Order of the Nile. This is one of the oldest in the sense it existed in Egypt even before Egypt became a republic. During the emperor's rule earlier, also they had this award, but in 1953 this award was restarted under the Republic of Egypt, and it's the highest award being given. And it's a proud moment for India. Honorable Prime Minister has received the highest civilian awards from 13 countries together with this award, and of which 6 of them come from countries which have population which is highest in Islamic Muslim population. 6 Muslim-dominated population countries, totaling, all of them total to 13, 6 plus the rest, so total 13 countries have given. And in this visit, I like to highlight a few things which are equally important. Honorable Prime Minister was welcomed by the Prime Minister himself of Egypt. Just one minute, get the papers ready. And other than being received by the Prime Minister himself, the Grand Mufti of Egypt has also received him and given him all the honors. In Egypt's history, the Grand Mufti holds a very high and respectable position. He was received by them. Other than that, the Indian Muslim community called the Bohras, they run a very big mosque there, and in that mosque, Honorable Prime Minister was invited and taken to visit, and even that has gone down so well. The chief of that mosque has also received Prime Minister. This visit is of a Prime Minister of India coming after 26 full years, when the last visit of Honorable Prime Minister from India had happened. So this visit has attained quite a high prominence in Egypt. Other than meeting the Indian community, he had also set up an institution of excellence even there. So I think this visit to Egypt attains great importance. मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बोल दिया. रिक्वेस्ट आ रही है अनिल बलूनी जी से थोड़ा हिंदी में बोलने के लिए. सिर्फ मैं इतना कह सकती हूँ कि अब तक मैंने यूएस विजिट के बारे में संक्षिप्त में बोला है, क्योंकि इससे पहले माननीय मंत्री
स्मृति ईरानी जी भी और हरदीप पुरी जी भी आपको विस्तार से इस विषय में आकर आपसे संबोधित किए, मगर मेरे तरफ से ये मैं जानकारी आपको देना चाह रही हूँ कि भारत की प्रधानमंत्री जी का सेकंड जॉइंट सेशन में बात करने का मौका हर बार किसी को मिलता नहीं है। अब तक जितने भी लोगों को मिले, बहुत कम लोगों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिला है। और जॉइंट सेशन एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसान इनविटेशन आया है, मतलब दोनों रिपब्लिकन्स भी डेमोक्रेट्स भी प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किए एड्रेस करने के लिए। इस विजिट के दौरान अच्छा सा बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रिलेटेड विषय भी, डिफेंस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी जो आवश्यकता पड़ती है वो सब का भी, पर्टिकुलरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ जो बेंगलुरु में स्थित गवर्नमेंट के कंपनी है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी और इंजन प्रोडक्शन का जो एग्रीमेंट हुआ है वो मैं मानती हूँ बहुत अहम है। फिर जॉब क्रिएटिंग विषय में भी एग्रीमेंट्स जो उधर हुआ है उसके कारण इधर टेक्नोलॉजी आना, इधर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और गूगल जैसे कंपनी और ज़्यादा कमिट करना कि हम आकर के भारत में पूंजी निवेश ले आएंगे, ऐसे करने से हमारी रोजगार बहुत लेवल तक बढ़ाने का संभावना है। फिर इजिप्ट के विषय में भी मैं ये बात आपके सामने रखना चाह रही हूँ। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ मेजॉरिटी में है या ज़्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, ये इसमें एक संदेश मिलता है कि ऐसे देशों में, ये प्रॉब्ली 6th कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम ज़्यादा है, ये ऐसे 6th कंट्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये अवार्ड मिलना बहुत ही संतोष का विषय है। अब तक 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। इसीलिए मैं मानती हूँ इजिप्ट के विषय में ग्रैंड मुफ्ती का स्थान बहुत अहम है। उन सोसाइटीज में मुफ्ती का स्थान बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। ग्रैंड मुफ्ती का भी प्रधानमंत्री जी से भेंट हुआ। फिर भारत के बोहरा कम्युनिटी इजिप्ट में बहुत अच्छा संख्या में प्रेजेंट है, वो उस कम्युनिटी से भी प्रधानमंत्री जी का मीटिंग हुआ। मैं मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना कहकर क्वेश्चंस के लिए छोड़ देती हूँ। पार्टी के ओर से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत ही हर्ष व्यक्त करते हैं और उनको बधाई भी देना चाहते हैं कि अवार्ड मिला है और भारत के स्थान उनके मेहनत के कारण आज इतना ग्लोबल स्तर पर रिकग्निशन मिल रहा है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ओर मैंने बहुत ही आनंद व्यक्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। जतिन, Ma'am, you will briefly explain the Prime Minister's visit to US, achievements and the significance. But ma'am, concerns have been raised about how minorities are treated in the country. Opposition parties allege of you opting double standards while treating with minorities. What you have to say on that? I think on this question, I've briefly explained also as to how out of the 13 awards that he's been given till now as Prime Minister of the country, 6 have been given by countries where Muslims are in majority. Honorable Prime Minister himself during the press conference in US has said how his government works on Sabka Saath Sabka Vikas principle and doesn't discriminate against any community whatsoever. But the fact remains that repeatedly when people join in this debate and highlight issues which are non-issues in a way, because if there are issues in states which are to be raised,
They are being raised at the state level. Law and order is a state subject. People are taking care of it. Elected governments are there in each of the states which respond to it. To just allege without basic data in hand just tells us that these are organized campaigns which purposely are being leveled at the doorstep of the Prime Minister. Otherwise, why would countries give such an honor to Prime Minister? And why would there be a distortion in understanding how India and its minority population, irrespective of which religion they belong to, minority population, are being part of the Indian mainstream? Any question? Anand Pandey, TV9. मैम ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी ने पूछा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सरकार क्या कर रही है। राहुल गांधी भी जब विदेश जाते हैं तो ये सवाल उठाते हैं, लेकिन इजिप्ट के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं वो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ सभी धर्मों के लोगों को लेकर एक साथ चल रहे हैं और जो बहुलतावाद है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इजिप्ट भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर मैं मानती हूं कि इस देश में ही क्योंकि राजनीतिक तरीके से बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ चुनावी रास्ता में, ठीक है ये कर्नाटका में एक जीत हुई उसको मैं बोल नहीं रही हूं, मगर राजनीतिक रास्ते में चलते हुए जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रही, इसीलिए ऐसे कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें कांग्रेस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुत ही स्पष्ट दिखता है, जहां पाकिस्तान में जाकर के उनके मदद मांग रहे हैं कि भारत में सरकार बदलना है, आप भी एक हाथ जोड़ो करके। और ऐसे टूल किट्स जो विदेश में चलती है उन सबको भी अभी काम में लगाया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि जनता उनका सुनेंगे, इसीलिए ऐसे रास्ते अपना करके प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे एलिगेशन डाल रहे हैं जो बेबुनियाद है। और ऐसे एलिगेशन डालने वाले का पीछे भी देखना चाहिए। जो कल मैंने बहुत ही आश्चर्यजनक हुई कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ। और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। इसीलिए मैं मानती हूँ ये सब हमारे विपक्ष भी बाहर जाकर के बात करने के समय भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को वो डिफीट कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोगों को उछालते हैं और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं बिना ग्राउंड लेवल डिटेल्स को लेते हुए। विनीत, TV18। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि 6 मुस्लिम देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पीएम को मिला है, लेकिन कई मुस्लिम नेता जो है या फिर कई राजनेता जो है पीएम नरेंद्र मोदी की मुस्लिम नीति को लेकर के लगातार विरोध करते रहते हैं। ओवैसी की सभा में हमने देखा महाराष्ट्र में औरंगजेब के नारे लगे हैं, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे हैं, कैसे देखती है मैम? नहीं, ये सब मैं यही बात करने के लिए कोशिश करते हैं। आई विश टू से दिस इन इंग्लिश।
You may please get it translated in Hindi. I find this deliberate attempt to vitiate the atmosphere in this country because they think they cannot win against the developmental policies of Prime Minister Narendra Modi. Whether giving the poor a house, a toilet, electricity or cooking cylinder, to giving samman to women, to making sure that every policy of the government works for the poor, and understanding democracy and supporting democracy. They are just not able to defeat Prime Minister Modi on these things, and therefore they create an atmosphere where people think there is insecurity in this country. Tell me how many people who are speaking in this country have even been questioned. All those people who are questioning Prime Minister Modi's achievements should please put on table their own achievements before they bring in allegations like this. बहुत बहुत धन्यवाद. Can you share what is the step to solve the Manipur? Home Minister Ji has spoken about it, so there's no need. Yesterday there was an all-party meeting also. There's no need to add on to it. Ma'am, how do you look into the opposition meeting held at Patna 2 days back? Yeah, they're coming together. I don't know for what. Their one-point agenda is defeat BJP. But are they saying what they will do to people? During their tenure, highest level of corruption prevailed in this country. Whereas now, 9 years have passed by, only development and development-related activities are happening, not one whisper of corruption. So first let them offer as to what they will do to the people rather than say, if you have to defeat Modi. That cannot be a negative agenda, cannot be what people want to hear from you. Say what you're going to do to the people. Last question. जी. अभी इतने सारे सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस इंजन और कई सारे जो इकोनॉमिक हमारे टाइप हुए यूएस के साथ स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर और गूगल भी ला रहा है एआई की भी बात हुई तो ये सब बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर आप कहाँ देख रहे हैं इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इससे इसको कितना बूस्ट मिलेगा बिकॉज इस साल हमारी इकोनॉमी जो है लास्ट दिसंबर तक $3.75 ट्रिलियन की हो जाएगी तो क्या ये जो हमारा टाइप हुआ है और इतना बड़ा जो खास करके सेमीकंडक्टर में हम आ रहे हैं तो ये और भी जिससे कि ऑटोमोबाइल से लेकर कई सारे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो ये कहाँ तक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और क्या हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें 4th पोजीशन पे आ जाएंगे? नहीं, उसके लिए डेफिनेटली मेहनत हो रही है, वो विषय आपके संज्ञान में रखना चाह रही हूँ. मगर ये सेमीकंडक्टर और इन्वेस्टमेंट इन सच टेक्नोलॉजीज इतना रैपिड स्पीड में भारत देश में हो रही है जिससे सीधा असर जनता के ऊपर पड़ रही है. और जो अभी यूएस में साइन हुआ कि 65,000 हमारे लोगों को इस कारण ट्रेनिंग भी देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मतलब तुरंत हमारे युवा को इन एरियाज में सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसमें भी डेटा सेंटर्स में, ग्लोबल डेटा सेंटर्स में भी ये सब काम में आएगा. तुरंत इसका असर हमारे देश में पड़ेगा. मैं नास्कॉम के एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ, सब्जेक्ट टू करेक्शन. ग्लोबली मान लीजिए ग्लोबल डेटा सेंटर्स जो बड़ा बड़ा व्यवस्था है डेटा होल्डिंग का, डेटा शेयरिंग का, डेटा प्रोटेक्शन रिलेटेड अंशों का ऊपर और उसको डीप डाइव करने के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए ग्लोबल डेटा सेंटर्स बना रहे हैं पूरे दुनिया में. जहां तक मैंने सुना, अगर 100 सेंटर्स ऐसे दुनिया में सेटअप हो रही हैं, भारत में ऑलरेडी 50 हैव बीन सेटअप. आप नंबर का उदाहरण मैं सामने इसीलिए रख रही हूं, अगर पूरे दुनिया में 100 सेंटर्स रख रहे हैं, भारत में 50 सेंटर्स का ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट का काम पूरे होने के कगार में है. और जो बाकी 50 दुनिया में है उसमें काम करने वाले हमारे ही लोग जा रहे हैं. उसका असर हम थोड़ा समझना चाहिए कि इसके कारण हम विदेश में पूरे डेटा, पूरे सॉफ्टवेयर ऐसे जगह में भारत का लीडरशिप रोल
और उसका असर पूरे हमारे इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ रहा है। इसके कारण जॉब्स में भी, इसके कारण सब सर्विसिंग, सेकेंड लेयर इफेक्ट जो बोलते हैं, सब सर्विसिंग, इनका सर्विस करने वाले दूसरे का सर्विस करने वाले, ऐसे साइक्लिकली इसका असर पूरे इकोनॉमी में पड़ रही है। उसका डेटा विवरण भी आजकल नास्कॉम के द्वारा बहुत आ रही है पब्लिक में। भारत देश का लीडरशिप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेज और सास, इन सभी एरिया में पूरे दुनिया में रिकग्नाइज कर रहे हैं। इसका असर पॉजिटिव है इकोनॉमी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।